Hi. So, as you had opened the newspaper today, there was a buzzword amongst the defense aspirants as well as all the defense fraternity. Everyone was talking about the term that is tour of duty. So आज के न्यूज़पेपर में ये काफी चर्चा का विषय था. इनफैक्ट कल से आपने सुना होगा. So picture is still not clear. A lot of thing is still in pipeline. So it's just an exciting thing that people are waiting कि अच्छा अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई या ये अब नया चीज आ गया. Right? So it's just a program which is in pipeline and you can see this maybe. We are hopeful. In fact, every defense fraternity is hopeful that this is going to be the plan in the next by 2022 or maybe 2023, right? Nobody is sure because official there is no as such announcement. Anyways, even if the plan is induced, it will take at least 6 to 7 months to be initiated with, right? So today we are going to discuss what actually government is planning about this TOD, and of course we will be discussing some misinformation. राइट जैसे कि आपने हिंदी न्यूज चैनल में सुना होगा कि सेना बुला रही है, राइट आप ज्वाइन कीजिए. ऐसा कुछ नहीं है. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ज्वाइन एट एनी कॉस्ट. ओके, ऐसा कुछ नहीं लगता, सब कुछ आसान है. नाउ इतना आपने पढ़ा होगा. आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी नो दैट कि थ्रू दिस मैकेनिज्म इनिशियली 100 officers will be joining as well as 1000 jawans. There are a lot of aspirants, right? So take a case of the INET exam. When INET exam was introduced last year, in the first INET, there is hardly 58,000 applicants, 5800 approximately. 58,000 कुछ थे. I have checked out the official data. मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ. Whatever I am sharing right now is as per all the newspaper clippings which were published today in Indian Express, The Hindu, Times of India, as well as the leading national media, including the international media. Right? अगर कोई उन्होंने लिखा तो कोई blogs अच्छा जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनके ब्लॉग. देयर इज नो पर्टिकुलर व्यूज. आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर. जो भी न्यूज़ है, जो भी व्यूज है, ये सारे मैं एक्सपर्ट्स न्यूज़पेपर कॉलम से बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने सारे न्यूज़पेपर कॉलम नहीं पढ़ा होगा. आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट, ताकि एक जगह से आपको सारी जानकारी मिल जाए. ओके, so first thing, you might have heard 100 officers and 1000 jawan in the first go. Maybe it will increase later on, right? So you can think about if INET 1 has only 58,000 aspirants, but in INET 2, right, there was 1,30,000 aspirants. तो क्योंकि पहले INET में लोगों को पता नहीं लगा था, शायद मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों को पता ही नहीं लगा, क्योंकि पहली बार होता है तो there is no idea. फाइनल ईयर वालों को अपडेट नहीं हो पाया. सेकेंड टाइम काफी लोग अवेयर थे, दैट्स व्हाई मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइड. यू कैन सी दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एसएससी टेक, राइट, टीजीसी, यूएस एंट्री, लॉट ऑफ एंट्रीज आर देयर, एफकैट, इतने ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं. सो कैन यू इमेजिन द चार्म ऑफ डिफेंस फोर्स? ऑफ कोर्स इट्स अ चार्म फॉर द यूनिफॉर्म, salary, perks, incentive, government job, employability. These all are also the major factors which we can't deny, right? एक अच्छी जॉब है, सब कुछ मिलता है, तो that's why in this scenario, आजकल जो scenario, if you join the corporate, you can imagine. I'm talking about the average guy passing from, let's suppose, tier 2, tier 3 colleges. Even many of the people who are from tier 1 colleges, at an average the package is around 2.5 and varies up to 7 or 8. If you are from good college, maybe you are getting 6 to 7 lakh per annum, right? But in this coveted jobs, this uniform forces job, after the 7th pay commission, the salary is literally too good, as well as the uniform which you cherish about, right? So that's why we say that, okay, सर्विस along with एक ऐसी सर्विस है जहां पे आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, सैलरी, पर्क्स, इंसेंटिव एंड द टाइटल ऑफ बीइंग आर्मी ऑफिसर, एक सर्विसमैन, एवरीथिंग यू आर एंटाइटल्ड फॉर, अपार्ट फ्रॉम जो छोटी सी खुशी है, दैट इज कैंटीन फैसिलिटी, यू नो दैट, राइट? So coming to the point, starting with this, what's the agenda? I have compiled this information, right, from the leading newspaper and the reports by one of the, including some of the views of the Lieutenant General, actually, who was, Lieutenant General Rajesh Katyan, who was the Vice Chief of Army as well. तो मैंने उन सभी के reports पढ़े, सबके views पढ़े. I tried to integrate all of them, right? Let's start with this. So it is said to be a 3-year short-term, kind of internship type of program, where youth will be entitled कि आप 1 साल ट्रेनिंग लें, फिर 3 साल जो है आपको सर्विस दे सकते हैं. After that you have to quit that
and you can go back to your particular business or any employment, whatever you want to do. So the word is temporary, it's temporary, right? Next, this is not an instantaneous plan. So this was initiated on the basis of Kargil Committee report. Kargil, remember, Operation Vijay. Kargil Committee report ने ये भी बताया था कि many of the officers and jawans who had the experience of less than 3 years, right, had performed pretty well in that, right? So ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 10 साल 12 साल रहना पड़े. Of course, the time you spent in an organization will help you to grow much better as well as learnings. But ये रिपोर्ट ये कहती है कि 3 साल से कम वाले भी जो थे उन्होंने भी अच्छा किया था. Okay? Lot of people were there, so might be aware of this Kargil Committee report. Next, what is the basic agenda behind this? The first and the foremost agenda is reducing the expenditure. That is too clear, although we don't want to say it as a priority because it feels that financial goal has never been an agenda for the military, but of course it is, right? So reducing the expenditure means, now if you look upon the majority portion of the defense budget of the country, right, more than 30-35% goes to the pensioners after OROP, 191 pension के बाद, the pension has been quite good. तो pensioners का जो जो amount है वो defense budget में बहुत बड़ा share है. In fact, largest individual share है एक तरह से आप कह सकते हो, where we have around 76k officers who has been given pensions. मिलना भी चाहिए, सर्विस की उनको कोई दिक्कत नहीं है. As well as 23 lakh जवान्स जिनको पेंशन मिल रहा है. So major share यहाँ पे चला जाता है. Okay? So that's why now what army is trying these days. So आज के जो modern warfare है. So army is trying to modernize itself. यहाँ पे manpower is important, but the technological as well as the modernization of the army is also the thing which cannot be neglected. So modernization is the need of the hour. That's why they are trying to cut down the budgets on this and infusing that capital in developing the different weapons, or you can say the technology or the cyber warfare or biological warfare, the recent trends actually. Second, apart from this, what is the next thing? If unemployability is the biggest issue nowadays. काफी बच्चे हैं, they are from the good college, अच्छे पढ़े लिखे हैं, and many of the people you might be hearing, you might know actually, who are unemployed, they are not going to get good jobs or jobs according to their skills या उनको जितना आता है उस हिसाब से शायद नहीं मिलती है. So that has always been a concern for the government for the last 20 years, that is to provide employment to the youth of the nation. So for this what they are trying to do, okay, let us recruit them in the army on voluntary basis. Now what is the benefit? First, right, when they are serving in the armed forces for 3 years, what will happen after that? Majority of the organization, that is corporates, देखो दो एडवांटेज. एक तो वो आर्म फोर्सेस से ट्रेंड है, सो ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच जनरली डोंट जनरली सिविलियंस डोंट हैव. टाइम मैनेजमेंट, काइंड ऑफ डिसिप्लिन, फोकस्ड अप्रोच, दिस आर द थिंग्स व्हिच यू लर्न इन आर्म फोर्सेस एक्चुअली, जिसको आप मॉडर्न लैंग्वेज में OLQs कहते हैं, व्हिच इज इन्फ्यूज्ड. ओके, सो दिस थिंग्स विल मेक हिम a good citizen. So developing citizenship as well as such kind of a skilled, disciplined human resource will be a capital for any organization. तो आप जो retired persons होते हैं, काफी सारे defense officers, they are recruited, they join as a senior personnel in many of the corporates. If you look upon the corporates like Tata, TCS, maybe Infosys, right, or major corporate IOCL, maybe I remember ITC, right, इसमें जो HR है, काफी सारे human resource manager, HRM, these all are from the defense background, जो short service करके निकले. कुछ captains हैं, I know personally, एक दो लोगों को तो मैं ही जानता हूँ. I know Captain Ajay, who I think is he quit Infosys now, but he was the HR manager in Bangalore, right, and salary was, that is not to be disclosed, but it was more or less 1.5 lakhs per month, right, plus, which is not bad. Right, not bad, in a good city, good perks, incentive. उन्होंने quit किया फिर, and that was an asset for the organization as well because he was a better person to manage all the personals working in the company, right? So आप एक तो trained हो के आते हो, दूसरा अगर आप military training लेते हो, employability chances are far better in comparison to the other training. Reason, lot of things you can be an asset for the organization. राइट, सो ये दोनों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आप देखते हो काफी सारे, लेट्स टेक द केस ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और मे बी MBA ग्रेजुएट्स,
राइट? काफी बच्चे हैं जो आफ्टर बीटेक और एमबीए इफ दे आर नॉट एबल टू उनको अगर अपने सेक्टर में जॉब नहीं मिलती, दे प्रिपेयर फॉर 2-3 इयर्स, 2-3 साल तो तैयारी करते रहते हैं लोग, एमबीए की करे या गवर्नमेंट जॉब करे या फिर द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर सिविल सर्विसेज की करे, व्हाटएवर इट इज। तो 2-3 साल अगर वो यहाँ लगा दे तो वो बेनिफिशियल ज्यादा है। ओके, दिस इज माय वर्क एक्सपीरियंस as well as later on they can join in administration as well. Now इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, right? What are the other possible option? If you have got those training, government is planning कि कुछ administrative posts या तो security posts या management type चीजों में इनके लिए job reserve कर दे, right? So if you look upon the state government opportunity, पंजाब, हिमाचल, इन सबों में क्या है? In fact, चंडीगढ़ as well. Most of the department have the seat reserved for ex-servicemen, those who have the army experience, air force experience, navy experience, that is military personals, okay? जो armed forces के जवान, तो आपके लिए सीट रिजर्व होती है, तो रिजर्व होती है तो ऑफ कोर्स थोड़ी कट ऑफ कम होती है बिकॉज क्राइटेरिया इज डिफरेंट, सो एम्प्लॉयबिलिटी का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा एंड यू हैव अराउंड 90% चांस दैट यू आर गोइंग टू बी इंड्यूस्ड इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पंजाब पुलिस में देखो बहुत सारे डीएसपी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड होकर लगे हुए हैं, पंजाब पुलिस, हिमाचल में देखो बहुत सारे पुलिस में काफी जवान लगे, ऐसे बहुत स्टेट में होंगे, देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स ऐसे हैं, राइट? एंड you know, I will come up with my views कि कहाँ यूज हो सकता है in the later part of the discussion, but extending that discussion, let's come to the current scenario. Current scenario is the army recruits for permanent commission, short service, and we have one more thing that is territorial army, which is kind of job which is 2 months in a year or 3 months in a year, that can be converted to permanent commission as well. But ये अभी उतना ज़्यादा नहीं, नया स्टार्ट हुआ है, राइट? अभी मत कहने का मतलब 10 साल की बात है। बाकी ये दोनों पॉपुलर है, जो शॉर्ट सर्विस which is for 10 years or maybe for 14 years. Okay. So now गवर्नमेंट का ये विचार था, in fact the reports is, विचार का मतलब ये होता है by looking over the data, by playing with the data whichever is available, that if somebody is going to retire or leave by 10 years, मतलब 10 साल के जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और अगर आप 3 साल वालों को कंपेयर करो तो गवर्नमेंट इज कहती है कि 10 साल वालों पे और 3 वालों पे अगर हम उतने ही एम्प्लॉयबिलिटी रखें, वी आर गोइंग टू सेव अराउंड 6 करोड़, मतलब 5 करोड़ समथिंग की बात है, मान लो 5 करोड़ के आसपास, और अगर 14 बार के बताए तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 करोड़ के बीच में सेविंग होगी। नाउ दिस ऑल रिपोर्ट्स हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस along with a research paper published in the seminar conducted by a think tank, Takshila Institute, which is in Bangalore, I think, right? So that is a think tank for the defense forces, where a lot of retired major generals or lieutenant generals or defense experts submit their research paper, अपने views रखते हैं। तो this was one of the report that is said by Lieutenant General Dr. Prakash Menon, I remember, राइट? उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, उसके बेसिस पे ये सारा चीज डेटा एनालाइज किया गया, तो आर्मी विल हैव अ ह्यूज सेविंग विद दिस स्कीम, तो पैसा बचेगा, दैट इज वन क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स द बिगेस्ट क्राइटेरिया इन व्हाटएवर गवर्नमेंट थिंक्स राइट नाउ, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है, बट गवर्नमेंट के हिसाब से ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, एंड गवर्नमेंट डजंट वांट टू सेव दिस मनी, दे वांट टू सेव दिस मनी फॉर द परचेज और यू से द डेवलपमेंट ऑफ द रीसेंट मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। वो जरूरी भी है because the kind of, you can say that it's not only the man versus man war nowadays, things have changed and we have to move on, right? Now what are the benefits you will get if person joins this as an officer or as a jawan? Of course you will be called as ex-serviceman, one of the biggest benefit, access to all those including canteen which is available for ex-servicemen, right? So during service you will get all those what an officer gets, along with, right, so ECHS, etc., everything. Now if there is any casualty during that, the compensation will be same as that of an officer in permanent commission, right? Next, coming to कि अगर आप मान लो SSB में जाते हो, let's suppose, and if you look over India में, to be honest, हमारे पास innovation थोड़ी कम होती है हर जगह, right? So if you ask about कि voluntary service और ऐसी कहीं है क्या किसी कंट्री में? Yes, of course. So this जो हमारा स्कीम है ना, that has been actually motivated by Israel Defense Forces, इजराइल में। वहाँ पे क्या है, 18 to 25 years से जो भी है, उनको होता है कि आप फॉर्म भरे, it's mandatory, फॉर्म भरिए। If government feels, तो आपको जो है कॉल आएगी, मतलब जरूरत होगी आपको, जिस समय अवेलेबल होगा, you have to go to the nearest camp, उसके बाद आपको 1-2 दिन में तैयार करके फिर उसका ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ओके, इससे फॉर्मेलिटी हुआ, वहाँ सबको 18 साल के बाद फॉर्म भरना पड़ता है। Similarly, we have in Bermuda,
France, Singapore, right? So this all have the voluntary as well as mandatory service. Mandatory तो है, कहने का मतलब voluntary तो additional है, mandatory तो है कि चलो आप जो है वो तो करते ही रहेंगे. Apart from this, compulsory services available in Brazil, Sweden and Turkey. So इन countries में compulsory military as a compulsory service, alright? तो ये था all about tour of duty, which I got from the newspaper, right? जो updated ones, the authentic one जो है. Now, some people जैसे आप डिबेट्स होते हैं तो what are the pros, what are the cons, right? किस क्या सही है गलत है. So you know whatever I am saying, this all are the wordings of the what we say that the major officer, rank officer, lieutenant general, major general, vice army chief, who has written columns on this. Okay, इस views में मेरे advantage disadvantage में मेरा personal कोई views नहीं है. I am not a defense expert, right? Pros, around everyone, around 60% plus people have said that this is a good scheme, right? Of course army needs modernization, they need to purchase this, right? If of course दूसरी चीज, in fact people need discipline, right? अब जैसे if you talk about this scenario, corona scenario, you can see the lack of discipline, lack of military discipline अगर होता तो ऐसा chaos नहीं होता. This is what they say, right? And if you train people, they will be more employable in comparison to this. जैसे कि आज के डेट में अगर 100 लोग रिटायर होते हैं आर्मी से, around 60 are re-employed, right? चाहे वो SSC या ग्रेड सी में हो, डी में हो, ए में हो, जिसमें भी हो, they are re-employed. So of course employability skills of a retired military personnel is more than a normal educated citizen. So that means that we are targeting employability criteria. जो unemployment का जो बहुत बड़ा issue है, उसको भी हम target कर रहे हैं. That is the biggest point we are saying. तो fund वाले को भी हमने okay किया, unemployment को भी okay किया. The majority has supported this. But to talk about, I was going through a report. The Lieutenant General, sorry, Major General, Lieutenant General, I remember the name, that is Rajesh Kania. तो मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ because the wordings used by him, मतलब इन्होंने वो बोला है, I am nowhere to condemn or criticize कि ये policy सही है कि नहीं. तो he was telling on a television channel, actually he has been the vice chief, right? So उन्होंने कहा कि this is wrong. Those who want to serve the nation should go full time. उनका ये था कि फिर पार्ट टाइम क्यों? You cannot compromise the national security with the salary and perks, or you can say that budget. But this is what he said. Okay, so security cannot be. He has actually quoted the statement that in 1950 Jawaharlal Nehru ji said that there is no need of army. We can do whatever is required with police. Reason because वो शांति के पक्ष में थे. बहुत ज़्यादा उस समय वैसे भी अहिंसा का माहौल था. तो नेहरू जी ने ये बोला था पंचशील समझौता वगैरह के बांडिंग समिट वगैरह में, राइट? सो दैट इज डिफरेंट इशू, बट ही हैज कंडेम्ड कि दिस इज नॉट ए गुड पॉलिसी, इट इज जस्ट रिड्यूसिंग द बजट कि आप वीड आउट करने जाते हो, राइट? तो दिस इज द अगेंस्ट पॉइंट, और ही हैज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टेड विद द प्लान in pipeline. Now what I personally feel, the last thing, you can say that कि as an engineering graduate, as a mentor, as a teacher, or I had been in industry corporate for around I think 3.2 years, 3 साल 4 महीने रहा हूँ मैं लगभग. So I feel that कि okay, this is of course a good thing कि I have seen many of the military personnel, of course they all were from the officers entry actually, तो वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे होते थे. They were quite disciplined, और instructions were quite clear. The man-to-man management was really beautiful. So that will actually add value to any person who join that. So corporate के लिए beneficial scheme है कि employability skill हो जाएगी. दूसरा, ऐसा करने से क्या होगा, जो लोग बैठ के जो frustrate हो रहे होंगे, like suppose कि they are appearing for exam, but you know that any of the entries, any of the job is nowadays difficult, especially government job. तो गवर्नमेंट कैन प्लान कि लेट्स सपोज जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें इनकी रिजर्व सीटें कर दें, जो अभी भी है. इफ यू लुक अपॉन द IIM कोर्सेज, देयर इज 24 वीक्स ऑफ कोर्स फॉर स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्सनल इन IIM, जिसके लिए 60% गवर्नमेंट पे करती है, 40% ये करते हैं, आपको खुद करना होता है. बट गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि इनकी दूसरे कोर्सेज में एडमिशन की सीट रिजर्व कर देंगे ताकि वो वहां से एक करियर स्विच ले सके. दैट इज ऑल्सो गुड. बट is it going to be easy? No. Entry has been same, एग्जाम होगा और शायद SSB भी होगा, but SSB की ड्यूरेशन कम होगी. I am sure that SSB duration will hardly be 2 to 3 days. वो कम करेंगे, they will plan out, they will chalk out some plan, right? ताकि इनको भी इंडक्ट करना है, right? Exam is always there, और अगर एग्जाम एज ए फिल्टर आपने लगा दिया तो फिर बात वही हो जाती है. because even if you look for the TA exam which is written is quite easy,
और यू कैन से दैट सम अदर एग्जाम्स। तो रिटन में ना जो कुछ ऐसे बच्चे भी शायद बाहर जाते होंगे जिनके अंदर वाकई आर्म फोर्सेस वाली क्वालिटी होती है, राइट। सो एक फिल्टर लगाने से ऑफ कोर्स सबका ज्वाइन करना तो रुक ही जाता है, राइट। चेक्स एंड बैलेंसेस इज देयर, बट ऑफ कोर्स इट्स अ गुड मूव। बट लेटर ऑन मतलब एक और एग्जाम ऐड हो गया, कहने का मतलब ये है। सो in fact it will keep your option open. So this is all about the TOD which you people might be buzzing around day out, right? So I think इससे ज़्यादा information अभी कहीं भी available नहीं है। इसमें मैंने आपको SSB से related question ही बताया कि can you name some example जहाँ पे कि है you need to know about Kargil committee report and SSB can ask you what was the name of operation in Kargil, right? So this is, I hope this discussion was beneficial for you as an overhaul, right? Thank you. Any question, queries, do write us at even a WhatsApp as well as write us comment भी कर सकते हैं आप। Okay, this is the DC official number. You can share your reviews. You can share this article. All the best.